यहाँ पे हम थोड़ा सा वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन समझेंगे. सी दिस डायग्राम, इट इज सेइंग वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट द कैविटी. व्हाट आर दे आर द कैविटी स्पेस है. इस कैविटी के अंदर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोरॉइड प्लेक्सस. अब कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है? कोरॉइड प्लेक्सस इज जनरेटिंग CSF. हमने पहले पढ़ा था CSF. व्हाट इज CSF? Go to page number 190. What it's reading? Lymph-like fluid secreted by choroid plexus. And where is it present? In the ventricle of the brain. So ventricles क्या हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. Even though there is not much in detail, but ventricles को पढ़ते वक्त कुछ शब्द आपके दिमाग में बार बार आएंगे. अब वो कौन से शब्द हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहला, ओके पहले तो आप देख लो वेंट्रिकल्स के नंबरिंग. दिस इज़ 1 2. ओके, 2 ventricles surrounded by diencephalon. Okay, then number 2, 1 and 2 ventricle clear है. This is third ventricle and this is the fourth ventricle. ये सारे ventricles एक दूसरे से connected है. अब कैसे कनेक्टेड है वो देखते हैं. यहाँ बता रहे हैं फोरामेन ऑफ मोनरो. वेयर इज दिस फोरामेन ऑफ मोनरो? इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे. ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकेंड वेंट्रिकल है. तो जब फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल जब थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट हो रहा है, मतलब इस जगह को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो. ओके, तो फोरामेन ऑफ मोनरो क्या कनेक्ट कर रहा है? जो ऊपर के 2 वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो हेमिस्फीयर के अंदर है, डायएन्सेफेलॉन के अंदर है, उनको थर्ड वेंट्रिकल साथ कनेक्ट करता है. अब जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कैसे कनेक्ट होता है? देयर इज, you call this region, okay, this is, I'll repeat it, this is the third ventricle, this is the fourth ventricle. So connection between the third and fourth ventricle, you call it as duct of Sylvius or ether. What do you call it? Duct of Sylvius or ether. So ये याद रखो. आपको ये मालूम होना चाहिए आपके पास कितने वेंट्रिकल्स हैं. 4 वेंट्रिकल्स हैं. ब्रेन में भी स्पेस है. कुछ है कि नहीं, बोलते ना खाली है दिमाग. हाँ, कुछ जगह है खाली. 4 वेंट्रिकल्स आते हैं. लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर एक है, राइट हेमिस्फीयर के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स. राइट, अब आपको लेबलिंग के साथ समझ में आएगा. लैटरल वेंट्रिकल कहाँ पे? एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में और एक राइट हेमिस्फीयर में. जो लैटरल वेंट्रिकल है वो किसके अंदर एनग्रैप्ड है? डायएन्सेफेलॉन के अंदर. उसके बाद है आपका थर्ड वेंट्रिकल. जो लैटरल वेंट्रिकल है उसका और थर्ड वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है वो कौन करता है? फोरामेन ऑफ मोनरो. अब जो थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल का बीच का कनेक्शन कौन करता है? ईथर या डक्ट ऑफ सिल्वियस. दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर. ओके, I will see if I have a video to share with you. Consists of the following: two lateral ventricles, a third and a fourth ventricle. Let's talk about each one of those, okay? So here we're going to do this through a lateral view of the brain, and this is the brain, and then we've ghosted as if we're Superman looking through, and we can see those ventricles from a lateral view, and then this is the same brain, except in a coronal section from an anterior view. Okay, so the lateral ventricles are paired C-shaped chambers in each cerebral hemisphere. Okay, so there's one C-shaped lateral ventricle on the left, and there's the other one on the right. And then if we look at the coronal view on the right side,
there in coronal section इसको is the lateral सामने से ventricle. On the देखेंगे तो left, ऐसे there's the दिखेगा, other left lateral and ventricle. right. There's two of them. Which is first and second, it doesn't really matter. There's आपके just two textbook में lateral थोड़ा सा ventricles, और which is ऐसे why we have बड़ा a third करके बना ventricle. रखा है इन्होंने, हाँ? It's the So largest don't out of get all the confused. ventricles. So it's far bigger than the third and the fourth ventricle, and it's below the corpus callosum. So in this coronal section, there's our corpus callosum. It's I right think I below have that a better large view. It is a clear fluid that has several important functions in our central nervous system. Now, you might be wondering where this fluid comes from. Well, almost every part of the ventricular system that we're going to see in this tutorial contains a choroid plexus, which includes epithelial cells that produce the cerebrospinal fluid. So as I just mentioned, there are 4 ventricles within the brain. 2 lateral ventricles, the left and right lateral ventricles, the third ventricle found near the center of the brain, and the fourth ventricle located deep to the cerebellum. Before we go any further, let's orientate ourselves. The image you can see on the right will feature throughout this tutorial, so it's important to understand what exactly we're looking at. Basically, what we have here is a side-on view of the ventricles of the brain, which are coloured blue, with the otherwise surrounding cerebrum removed, so we can see structures such as the cerebellum, the brainstem, and the start of the spinal cord. So let's begin with the 2 largest ventricles, which are the lateral ventricles. There is a lateral ventricle in each hemisphere of the brain, and therefore there's a left lateral ventricle and a right lateral ventricle, each found in the respective side of the brain. Here we can see the right lateral ventricle hiding behind the left lateral ventricle as we're viewing these structures from the left-hand side. So now let's have a closer look at these ventricles. Both lateral ventricles are roughly C-shaped. They have a central body and 3 horns projecting into the lobes of the brain, namely the anterior horn, the posterior horn, and the inferior horn. The area we can now see highlighted in green is the central part of the lateral ventricle, which is located in the region of the parietal lobe. Its roof is formed by the corpus callosum, and it's floored by the superior surface of the thalamus and the tail of the caudate nucleus. Now you may have noticed that our image has changed slightly, so let's Okay, you don't have to study too much in detail, but एक just general view मालूम होना चाहिए. हमारे ब्रेन में 4 कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. उस कैविटी के अंदर की जो लाइनिंग होती है, उनके अंदर की जो एपिडाइमल सेल्स होती है, उसके अंदर जो कोरॉइड प्लेक्सेस हैं, दे आर क्रिएटिंग फ्लूइड. यू कॉल दैट फ्लूइड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है. सो you should be able to remember the structure of ventricle of the brain. So diagram, figure 9.10, ventricles of brain. एक central plane से सामने से दिखा रखा है, एक sagittal side से दिखा रखा है. Okay, so it's not difficult, you can easily learn it. So today the diagram has to be thorough by you people.